is like him, lion and the lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the lion and the lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Mark chapter 4, this parable, the parable of the sower, is about that. The effect of spiritual environment, a perfect spiritual environment on the seed and its fruitfulness. मरकुस चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि जो बीज हमने बोया है उस पर वातानुकूल या फिर पर्यावरण उसके लिए जो चाहिए उसका जो असर उस पर देता है, उसकी उन्नति के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसका वर्णन जो है यहाँ पर ठीक रूप से किया गया है. So the environment and the environment we provide for increase is very important. वृद्धि के लिए जो पर्यावरण चाहिए, बढ़ोतरी के लिए चाहिए, उसके बारे में यहाँ देखते हैं. So we're going to talk about that. उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं. And there are several environment problems mentioned here. और यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे पर्यावरण की समस्याएं हैं जो हम यहाँ देख पाते हैं. One is called the bird problem. सबसे पहला जो है समस्या पक्षियों का है. That's a problem. एक समस्या है. It's there in that parable. उसी से दृष्टांत में बताया गया है. Birds पक्षियां taking away the seed. जो बीज को उठा ले जाती हैं. If you have an environment where the birds are free to come and take away and pluck away as much as they can, then you're not going to get a good result. अगर ऐसा पर्यावरण हो जहाँ पर पक्षियां आकर बोए हुए उस बीज को ले जाती हैं, उखाड़ के ले आती हैं, वो ठीक नहीं है. The second environmental problem is the root problem. Having no root, the word says. दूसरी समस्या उस पर्यावरण में जो है जड़ की समस्या, जड़ उसकी ठीक से न पकड़े तो समस्या. Because it says they hear the word gladly, but because they have no root. क्योंकि यहाँ बताया गया है कि वचन को खुशी से सुनते तो हैं पर वे जड़ नहीं पा पाते. And then thirdly, the weeds problem, the thorns, weeds. उसके बाद जो है झाड़ियों की समस्या, कांटे उठकटारों की समस्या, जो उगने लायक, अच्छी तरह उगने लायक नहीं बना पाते. Right? ठीक है. Weeds and thorns and thistles. कांटे और उठकटारों की समस्या. That chokes the effectiveness of the plant. जो उस पौधे पर जो बहुत बड़ा असर करती है. Then the fourth kind of environment is the environment that is called a good ground. चौथा एक ऐसा पर्यावरण जो अच्छी भूमि कहा गया है. So we're going to talk about this. उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. Environment that is plagued with birds coming in and causing a devastation. ऐसा पर्यावरण जो पक्षियों के द्वारा आकर जो है बहुत बड़े नाश को उत्पन्न कर देता है. Another environment is where the roots are affected. दूसरा एक ऐसा पर्यावरण जिसके कारण जड़ों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है. And the other is the weeds problem, the thorns and the thistle problem. और तीसरा जो है कांटे और उठकटारों की समस्या है. But the fourth environment is the perfect environment called the good ground. और चौथी समस्या है अच्छी भूमि वाली समस्या. Well, are you ready for this? क्या आप इसके लिए तैयार हो? Alright? ठीक है. Let's talk about the birds. पक्षियों के बारे में जरा आप देखते How many हैं. of you want to talk about the birds? कितने लोग पक्षियों के बारे में पढ़ना जानते हो? AFT, when you come, we talk about everything. AFT में जब हम आते हैं तो सभी चीजों के बारे में बात करते हैं. You know, birds are a real problem to farmers. पक्षियां जो है किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है.
they use scarecrows and a lot of different types of noise making devices to keep away birds, because birds, after you've sown and done everything, birds in 1 minute they just come and take away everything that you sowed and reduce the effectiveness देखिए totally. किसान लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ी मूर्तियां या पुतलियां जैसे बनाकर जो है खेतों में गाड़ देते हैं, और जिसके कारण जब पक्षियां जो बीज बोए हुए होते हैं उसको लेने के लिए जब आते हैं तो उसको देखकर डर कर भाग जाते हैं, तो पक्षियां बहुत बड़ी समस्या होती है। So you need to provide an environment where the birds don't play their game तो there. आपको जो एक ऐसा पर्यावरण उत्पन्न कर देना चाहिए जहां पर पक्षियां आकर को खिलवाड़ न करें। We'll talk about it in detail a little later, but let me cover it, first in simple इसके बारे form. में बाद में बात करेंगे, पर जो बात मैं बताना चाहता हूँ सिंपली बता देता Second, हूँ। the root problem. दूसरा जो है जड़ की समस्या। There is a little worm known as the cutworm that lives under the earth and operates under the earth. That is again causing devastation to देखिए एक farmers. छोटा सा कीड़ा जो होता है, जो जमीन के नीचे होता है, उसे कटवर्म कहते हैं, जो जड़ को ठीक से मिट्टी के साथ मिलाए रखना नहीं चाहता, जो काट देता है, बढ़ने नहीं देता। Operates under the earth, so you can't see it. वो भूमि के नीचे से काम करता है, हम उसे देख नहीं पाते Goes हैं। almost unnoticed. हर वक्त जो है देख ही नहीं पाते उसे। But all of a sudden you see the plants that you planted fall away, just drops dead. That's it, just falls away. अचानक क्या होता है कि जो पौधा तुमने बोया था वो बिल्कुल मरने Why? लायक बन जाता है। क्यों? Because they go to the root of that plant and they cut through the root. They cut the connection at क्योंकि the वे bottom. क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो है जड़ के पास जाकर जड़ को काट डालते हैं मिट्टी They के don't नीचे से। eat it all, but they cause the damage. They cut it so the thing becomes disjointed from the root, and therefore soon you will see the plant fall off. वे उस जड़ को ऐसा काट देते हैं कि बिल्कुल जड़ का मिट्टी के साथ कोई संबंध नहीं रहता, ऐसा काट देते हैं और वो पौधा जो है मरने लायक हो जाता है। They eat a small portion of it, but cause a big damage. The whole plant falls. वे उस पौधे का छोटा सा भाग ही काटते हैं पर पूरे पौधे पर सदमा पहुंचता है, Thereby affecting the ability of the roots to supply to the plant the nourishment it needs for growth. जड़ के द्वारा पौधे को जो पोशाक आने चाहिए थे वे उसे काट डालते हैं और उसके द्वारा जो है पौधे का पूरा पोशाक नाश हो Because जाता the है, thing is cut off. क्योंकि वो पूरी तरह से कट गया The है। earth with its water and nourishment, it's ready to supply it through the roots through to the plant, but that supply is cut off because the connection is cut off. देखिए पौधे के लिए जो जड़ से पोषक आने चाहिए थे, उसके लिए जो पानी की जरूरत थी, जो कुछ भी चाहिए था जड़ के द्वारा आता था, पर ये कीड़ा उसे काट कर Then नाश the कर देता है। weeds are another problem. दूसरा जो है कांटे और उठकटारे, जो एक और समस्या है, They are destructive weeds. वे बिल्कुल नाश करने वाले कटारे हैं। When God first made the earth, there was no thorns and thistles, no weeds. जब परमेश्वर ने भूमि को बनाए तो कोई कांटे नहीं थे, उठकटारे नहीं थे, Whatever you sowed, that's what grew. जो कुछ भी आप बोते थे वही उगता था। Isn't that nice? है कि नहीं? बहुत अच्छी You can बात। sow and nothing extra is growing. आप बो सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा या कुछ गंदे पौधे नहीं उगते, But now, पर अब the extras grow faster. एक्स्ट्रा जो है बहुत जल्दी उगते हैं। That's the curse. वही श्राप है। We sow something, but all around it and surrounding it, to the point of just choking it and overwhelming what we sow, so much of the thistles and thorns देखिए grow. अब क्या हुआ है कि हमने जो बोया है उसके साथ ये जो नाचीज पौधे हैं, जो कांटे उठकटारे हैं, बहुत जल्दी बड़े होते जा रहे That's हैं। why man has to till the ground with the sweat of his brow now. इसीलिए जो है भूमि पर जो है अपना पसीना बहाकर उसे सींचना पड़ रहा है उसे। Because the earth itself was working against him now. क्योंकि भूमि खुद जो अब उसके विरोध में काम कर रही It है। has ceased to be friendly to him. इससे पहले उसके साथ उसका अच्छा दोस्ती था, It is not cooperating अब with उसके him. साथ मिलजुल कर काम Because नहीं the कर पा रहा fall है, of man has affected the earth क्योंकि also. मनुष्य पाप में गिर जाने के कारण भूमि भी उसके साथ काम करने Earth लगी is है। revolting against sin and against what has happened to it. पाप के विरोध में जो है ये भूमि काम कर रही है, जो कुछ उसने किया उन सब के विरोध में काम कर रही So है। that is one way it shows forth this revolt by bringing forth weeds. अब ये कांटे उठकटारे उत्पन्न होने के कारण जो है एक रीति से वो अपना काम दिखा रहा When you है। have weeds in your garden, जब आपके बगीचे में कांटे उठकटारे हो you have a very poor garden. और तब आपका बगीचा बिल्कुल खराब बगीचा है। And when you make the effort to cut away all weeds and trim all weeds and just put them away, the weeds don't belong in your garden, they belong outside. Throw them away, cut them and pluck them and throw them away and clear the thing, then the
plant becomes very देखिए, fruitful. जब आप अपने बगीचे में जो आपने जो कांटे उठकटारे बोए नहीं थे, अच्छे पौधे बोए थे, उसके साथ जब कांटे उठकटारे उगने लगते हैं तो उन्हें काट डालो, उन्हें फेंक डालो, उन्हें नाश कर डालो, क्योंकि वे तुमने नहीं बोए थे, तुमने तो अच्छे बीज बोए थे। Okay? ठीक है, So let's look at this in detail. तो इसे विस्तार रूप से हम जरा देखते हैं। Talking about birds. पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं। First, let's talk about, look at the parable. See first how everything is mentioned there. सबसे पहले जो है उस दृष्टांत को देखिए, वहां सब कुछ बताया गया है। Verse 15, you read the bird problem. 15वें वचन में जो है पक्षियों की समस्या हम देख पाते हैं। The word is sown, but when they've heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their वचन hearts. बोया गया है, वचन बो देने के बाद जो है शैतान तुरंत आकर उस वचन को वहां से उनके मन से निकाल लेना चाहता Verse है। 16 and 17 give us the other problem, the root 16वां और problem. 17वां वचन जो है दूसरे एक और समस्या के बारे में When they बात heard करती the है। word, immediately receive it with gladness, but have no root in themselves, so endure but for a time. Afterward, when affliction and persecution arises for the word's sake, immediately they are वचन offended. को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर चढ़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते That's the हैं। root problem. यही जड़ की Verse समस्या है। 18 and 19 is the thorn problem or the weeds problem. 18वां और 19वां वचन जो है कांटे उठकटारों की समस्या है। These are they which are sown among the thorns, such as hear the word, and the cares of the world, and the deceitfulness of riches, and lusts of other things entering in, choke the word, and it becomes unfruitful. ये वे हैं जिन्होंने वचन को सुना और संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देते हैं और वह निष्फल रह जाता है। So that's the weeds. तो ये कांटे उठकटारे हैं। Verse 20 is the good ground. 20वां वचन जो अच्छी भूमि का These are वचन है। they which are sown on good ground, such as hear the word and receive it and bring forth fruit, some 30-fold, some 60 and some 100. ये वे हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। This is an orderly, controlled environment, the best environment for growth, and therefore it brings multiplication and increase. यह एक निर्धारित पर्यावरण है, अच्छा पर्यावरण है, बिल्कुल सफल करने वाला पर्यावरण है जो वृद्धि दिलाता, अच्छे फल लाता All है। these adverse environmental factors are taken care of and controlled, therefore this is a good ground. ये विरुद्ध उठने वाले सभी शक्तियों को जो नाश कर देते हैं, वातानुकूल पर्यावरण को नाश करते हैं और अच्छी भूमि में अच्छी फसल, अच्छी कटनी लेकर आते हैं। So the birds, the roots, the weeds, the good ground, तो everything यहाँ is पर there. पक्षियां हैं, कांटे हैं, उठकटारे हैं, जड़ की समस्या, अच्छी भूमि, सब कुछ यहाँ पर हम देख Now पाते let's हैं। talk about birds. अब पक्षियों के बारे में बात करते हैं। Now we got to talk about it in some detail. अब थोड़ा विस्तार रूप से इसके बारे में बात करें। Say, what about birds, brother? Birds, पक्षियों में क्या है, brother? What detail are you going to give us about birds? पक्षियों के बारे में आप क्या विस्तार रूप से आप हमें सिखाने वाले हो? Well, this is a parable. Jesus is using an analogy, a picture language. He's saying birds, but he really means the devil. देखिए, ये एक ऐसा दृष्टांत है जहाँ पर यीशु मसीह सभी चीजों को जो एक चित्रण के रूप में दिखा रहा है, समझाना चाहता है। If he's just talking about birds, we can, say something about birds in 5 minutes and close. पक्षियों के बारे में कुछ बात करना हो तो मैं कहता हूँ जल्दीबाजी में 5 मिनट में बोल के खत्म कर What he सकते हैं। means is, just like the birds come and take away the seeds, the devil has agents to come and take away the seeds. And therefore you need to understand what the devil is like and what kind of agents he has, where they are lodged, and how they come and how यहाँ they पर take यीशु मसीह away. ये बताना चाहता है कि पक्षियों का मतलब है शैतान उसकी तरह है। शैतान तुरंत आकर जो बोए हुए वचन को ले जाना चाहता है, किस तरह के एजेंट्स उसके पास है, किस तरह के काम वो करता है, बोए वचन को जो है कैसे लेकर आता है, कहां पर वो है, क्या करता है, कैसे ले जाता है। Hello. That's the Bible. यही बाइबल है। So birds, पक्षियां, look at him. He talks about it in plural. देखिए बहुवचन में बताता है। That means that the devil, Satan, the chief one himself does not come on every occasion trying to deal with you, with every individual. देखिए शैतान जो है, जो चीफ शैतान है, जो बड़ा शैतान है, वो आकर सभी कामें नहीं करता है, बल्कि उसके साथ कुछ और ऐसे छोटे मोटे शैतान होते हैं जो आकर सभी प्रकार के काम करते He हैं। works with a great big host of principalities and powers of wicked spirits. देखिए दुष्ट आत्माओं की एक बहुत बड़ी सेना, जिनके पास बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे सामर्थ भरे लोग होते हैं, उनके साथ वो काम करता He's है। got an organized thing going. उसके पास जो सब कुछ एक संस्था के रूप में काम करते हैं। How do I know he's organized? आपको कैसे मालूम कि वो बहुत संस्था के रूप में Because काम the करते हैं? Bible refers to the satanic forces, the kingdom of Satan, like this. It talks about principalities, powers,
and wicked spirits in high places. क्योंकि बाइबल में जो है बताया गया है कि वह एक संगठित रूप से जो है अधिकारों, सामर्थ्यों और दुष्ट आत्माओं की एक बहुत बड़ी मंडली होती है, वैसे में काम करते हैं। The language is more or less something that is used in governments and in administration. बाइबल की ये भाषा जो ऐसी बताई गई है जैसे दुनिया की सरकार जो काम करते हैं उसके रूप में काम करता है। There seems to be some hierarchy, some kind of a management system they have, some positions and powers that they enjoy. And all of those things are there. सही रूप से, एक व्यवस्थित रूप से जो एक मैनेजमेंट की तरह वो काम करते हैं, उच्च श्रेणी से लेकर नीचे श्रेणी तक जो है सबको जो सामर्थ्य दिए जाते हैं। Managing director, and under him so many managers, and under him so many supervisors, under him so many agents. जैसे एक बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के नीचे बहुत सारे डायरेक्टर्स लोग होते हैं, उसके नीचे सुपरवाइजर होते हैं, उसके नीचे काम करने वाले होते हैं, ऐसा संगठित रूप से काम करते हैं। Set up like that. That's why the Bible refers to it as principalities, powers, and mights and dominions. उसके पास एक ऐसा सेटअप है, इसलिए बाइबल जो है प्रभुताएं, प्रधानताएं और सामर्थ्य वाले लोग कहा गया है। So he is dispatching all these fallen angels everywhere. वह जो है गिरे हुए स्वर्गदूतों को डिस्पैच कर रहा, सभी जगह भेज They रहा are है। daily on dispatch. हर दिन जो है भेजे जा रहा है। Thousands and thousands of them, myriads of them, going everywhere, doing the will of Satan. हजारों हजारों ऐसे गिरे हुए स्वर्गदूत जो है शैतान के द्वारा भेजे जा रहे हैं। There is a whole world out there, the world called the world of darkness. एक पूरी दुनिया जो है ऐसी है जिसे जो है अंधकार का राज्य, अंधकार की दुनिया कहा गया है। With thousands and thousands of spirits, myriads of them going about doing their work. हजारों हजारों आत्माएं जो है ऐसे जाकर शैतान के लिए बाहर काम करने जा रही हैं। वे क्या करते हैं? Well, their master, the devil, is a thief. उनका मालिक जो शैतान है वो चोर है। So this is a big gang of robbers. तो ये जो है चोरों का एक बहुत बड़ा दल है, एक बहुत बड़ा गैंग है। Hello. How else can I describe that? कैसे मैं ऐसे वर्णन कर सकता हूँ? It's a big group of thieves. चोरों का एक बहुत बड़ा गुट है। The devil is one who's a thief, therefore he steals. शैतान ही जो है चोर है, इसलिए वो चुराता है, चोरी करता है। Suppose you get robbed today. अगर आज आपकी चोरी हुई है, hope not. ऐसा ना हो आज। But suppose you get robbed today, you lose everything. You see. अगर ऐसा कुछ आप खो देते हो, सब कुछ खो देते हो। Sometimes when the robbers are very effective and they know what they're doing, they can wipe you out. कभी-कभी ये चोर इतने शक्तिशाली होते हैं, उनको मालूम है कि वो किस तरह के अपराध कर रहे हैं। Not only your house, सिर्फ तुम्हारा घर ही नहीं। Nowadays there are a lot of white collar crime guys that will wipe away your bank account also. आजकल जो कुछ ऐसे चोर होते हैं जो सीधे साधे दिखते तो हैं, तुम्हारे बैंक अकाउंट से खाली कर देते हैं। They will hack into your account and they'll do all kinds of stuff where you'll find that your balance instead of being in lakhs it's nil. आपके अकाउंट के अंदर जाकर जो है चोरी करते हैं, लाखों रुपए जो तुम्हारे अकाउंट में थे आखिर में निल बैलेंस दिखता है। Recently I received an email saying please update your banking information, your username and password and everything. Otherwise, your internet banking will be terminated. थोड़े दिन पहले जो है मुझे एक ईमेल आया जिसमें बताया गया था कि अपने ईमेल के जो अकाउंट हैं, जो आपके पासवर्ड है, यूजर ने सब अपडेट करिए, नहीं तो आपके सभी चीज जो है, सभी इंटरनेट बैंकिंग जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। My God, I need the internet banking, so I went to give all the information again, update it. तो मुझे इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत थी, इसलिए सारा कुछ अपडेट करने के लिए मुझे जाना पड़ा वहां पर। When I went into that site, our bank has put a message there saying, "Don't get into this site. These are hackers trying to get into your account, gather the information, your password and your username." जब मैं उस साइट पे गया तो वहां पर हमारे बैंक वालों ने जो है एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ, कहा गया है कि यहाँ पर मत आइए, यहाँ पर अपने अकाउंट्स के डिटेल्स मत दीजिए, क्योंकि ये बैंक के अकाउंट को हैक करने वाले लोग हैं, यहाँ पर कृपया न दे ताकि तुम्हारा नाश हो जाए। The devil has got computer thieves also now. तो आजकल शैतान के पास जो है कंप्यूटर में चोरी करने वाले लोग भी आ गए हैं। He's got a whole IT department wing. पूरा आईटी विंग उसके पास है। Hacking department that gets into other people's accounts. हैकिंग डिपार्टमेंट जो दूसरों का जो चीज है उसे चुराते हैं। So the devil is a big thief. तो शैतान बहुत बड़ा चोर है। And when you get robbed, then you're wiped out. तो जब आपकी चोरी हो जाती है तो पूरी तरह से
खत्म कर What देते हैं। happens when people get robbed? People are getting robbed every day. Christians are getting robbed by the devil every जब day. चोरी होता रहता है तो क्या होता है, ईसाई लोगों को हर दिन शैतान चुरा रहा That's है। why instead of increasing, they are decreasing. इसीलिए जो है बढ़ोतरी की वजह ये घटती पा The रहे हैं। devil has robbed them. शैतान ने उन्हें चोरी कर लिया है। Robbed them of the word, and therefore they have nothing that can bring increase. उनके अंदर से उस वचन को चुरा लिया है, इसीलिए जो वृद्धि उनके अंदर आनी थी वो So रुक they're गई है। robbed and they lose everything, and then what they say, well, I think, brother, God wants me to be poor because maybe this is God's will. God has done this to me. Who else could have done this to me? God देखिए, must सब have चीज done this अपना to me. गवा देने के बाद शैतानों के हाथ में वो क्या कहते हैं, परमेश्वर की यही इच्छा है ब्रदर, परमेश्वर ने शायद हमें ऐसे ही जीने के लिए छोड़ दिया है, परमेश्वर ने यही इच्छा किया है तो हम ऐसे ही जी लेते हैं, क्या कर Some सकते people हैं। have said that to me. कुछ लोगों ने मुझे ऐसा कहा है, The devil robbed them, but they are attributing it to God. शैतान ने उन्हें चुराया है पर वो परमेश्वर को कहते हैं। Christians make a very big mistake. He is the robber. God is not a thief. God is not robbing you. God is not taking away your good things. God wants you to have good things. The devil is robbing you every day. ईसाई लोग जो हर वक्त इसी बात को कहते रहते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम सब चीजों को गवा लो, बल्कि शैतान सभी चीजों को चुरा कर ले जा The रहा है। Bible teaches that God, you can know what is from God. God is the giver of every good gift. बाइबल बिल्कुल साफ साफ बताता है कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर जो है सभी भली चीजों को देने वाला The Bible परमेश्वर very है। clearly says that the devil is a thief. बाइबल बिल्कुल साफ साफ बताता है कि शैतान चोर है। And that is why in Revelation chapter 2 we read, hold fast that which you have. इसीलिए प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसे When I was थामे living रहो। in the city of New York going to college, न्यूयॉर्क सिटी में जब मैं रह रहा था, वहाँ कॉलेज जाता था, there is an area called a borough, an area called Bronx there. वहाँ पर एक एरिया का नाम है ब्रॉन्ज। There is one section of it, to which a train goes, and the train is called Mugging Express. Because you get mugged if you get in the train. You will invariably get mugged. You'll lose क्योंकि your वहां पर एक wallet, you'll lose ऐसा something. सेक्शन है जहां से ट्रेन गुजर के जाता है, उसे जो है मगिंग एक्सप्रेस बोलते हैं उस एरिया को। वहां से ट्रेन गुजर के जाता है तो वहां पर तुम जाओगे तो उस रास्ते से ट्रेन से You तुम्हें चुरा will लेंगे। surely get mugged. आप निश्चय रूप से अपना कुछ वहां गवा So when दोगे। I first made a trip there for something, one fellow told me, be careful with your pockets. Hold fast that which you have. जब मैं वहां से गुजर कर जा रहा था एक बार सबसे पहली बार ट्रेन में, तो मेरे दोस्त ने कहा कि जो तुम्हारे पास है उसे बचा के रख लो, थामे रहो। That's what I think about when I read Revelation 2. जब मैं प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय पढ़ता हूँ तो उसी के बारे में सोचता हूँ। Even in Madras, in some places, when you get on bus and public transportation, sometimes you got to hold fast that which you have. मद्रास शहर में जो भी जब तुम कभी बस में या कहीं सफर करते हो तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें सभी चीजों को थामे रखना जरूरी है। Because there are a lot of pickpocketers around. क्योंकि तुम्हारे चारों ओर जो है बटुआ मारने वाले And the लोग होते devil हैं। has got a big pickpocket gang who picks pockets. शैतान के पास जो एक बहुत बड़ा पिक पॉकेट करने वाला एक गैंग है जो चोरी करते हैं। Hello. हेलो, Are you there? क्या आप हो? Hold fast that which you have. जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, That पकड़े is रहो। why when living on earth, you need to watch out for this guy who wants to rob from you every chance he gets. He loves and he would love to take away everything that you have and leave you empty, blaming इसीलिए जब God. तुम भूमि में अपना जीवन व्यतीत करते हो तो यह व्यक्ति शैतान जो है तुम्हारे पास से सभी चीजों को लूटना चाहता है, ले लेना चाहता है और उस भूमि में तुम्हें खाली हाथ रखना He चाहता knows है। that Christians are good at blaming God. वह जानता है कि ईसाई लोग परमेश्वर पे इल्जाम लगाते रहते When हैं। they get their salary and come on the bus and lose their whole salary, they ask God, why God? Why did you जब वो do अपने this to तनख्वाह me? लेकर बस में सफर करते हैं और कोई उसे चुरा कर ले जाता है तो तुरंत आकर बोलते हैं, क्यों परमेश्वर, क्यों आपने ऐसा किया? Did God do that? परमेश्वर ऐसा Is किया? God going to take your salary and make a living out of क्या it? परमेश्वर तुम्हारी तनख्वाह को लेकर उससे अपना जीवन व्यतीत करने वाला The है? devil is this thief. शैतान ही चोर है। The devil wants to get into your money and get into your possessions and steal and take away what शैतान God तुम्हारे has माल given को to चुराना you. चाहता है, तुम्हारे पैसों को लूटना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी को नाश करना चाहता है, तुम्हें नाश करना चाहता है, खाली हाथ छोड़ना He चाहता wants to take it. है, वो उसे लेना चाहता है। And it is your job to keep what you have. और वो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे संभाल कर रखो। Whether it's your money or your business or your church or your family or whatever it is. Make sure you're aware of this devil that wants to take away from you every good thing चाहे and leave you तुम्हारा empty. काम हो, तुम्हारा पैसा हो, तुम्हारी कलीसिया हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारी शांति हो, जो कुछ भी हो,
इस शैतान को अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि वही जो सब कुछ लूटता है तुम्हें संभाल कर There रखना is a जरूरी है। devil around, my friend. मैं कहता हूं दोस्तों, शैतान चारों ओर है। You don't ever need to be afraid of God because God wants to give good gifts to you. परमेश्वर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर वक्त में भली चीजें देना Don't चाहता have है। to be afraid of God because God will never take away anything from परमेश्वर you. से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तुमसे कोई भी चीज लेना नहीं चाहता। Lay my life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you and you were always there. Troubled times, it's you I see. Put you first, that's all I need. Humble all I am, oh to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Grace abound so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. The way, the truth and the life, to live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for